heading talent sustainability portfolio within human resource function of Fatma Group. Giving back to the society and contributing to the overall growth of the economy is the very core of our organizational agenda. And in this regard, we are bringing a series of web sessions on various topics where our organizational leaders will share their lifelong learnings with you so you can leverage their learnings and further grow in your careers. Today's session is focused on discussion on food security and future of agriculture of Pakistan, thus covering our farmers, people associated with agri-industry, professionals, and students. In this regard, we have two industry recognized professionals with us to speak on the topic. So first speaker is has almost 30 years of experience in which he has worked in agri-related industry for 19 years. His insights about use of fertilizer in improving overall crop yield is unmatched. He has a master's degree in soil sciences from Agricultural University of Islamabad. So welcome Nasirullah Khan. Nasir sir, welcome to the session. Thank you very much, Unit. So pleasure to have you in the session. The second speaker is someone who has wealth of international experience in agricultural industry. His professional experience includes corn, canola, hybrid seed production, seed trial, and setting up and executing agri-tech farming in most of the developed countries. He has a master's degree in plant physiology and at University of Paris. So, welcome to the session, Hassan. Thank you, Junaid. So, my first question from Nasir Saab is, Nasir Saab, what is food security? बहुत हमने सुना है food security के बारे में. So, what actually it is? Ji, Assalamu alaikum to everyone. Junaid, first of all, thank you very much for having me in the session and especially of national importance. As you know, the word food security itself says something that basically, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, तो एग्रीकल्चर जो है ये बेसिकली वजूद में जब आया, the purpose was basically to meet the food requirements of the human beings, animals, and all living things. और जो जनरली जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका एक्चुअली पर्पस ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन की जो खुराक की ज़रूरियात हैं उनको अगर आप 100% पूरा कर लें तो आप समझते हैं कि योर नेशन और योर कंट्री इज सिक्योर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू फूड सिक्योरिटी के रेफरेंस से एंड सेम इट अप्लाइज टू द एनिमल्स एज वेल बिकॉज animal is another source of food chain for the human beings. जो जब हम कंट्रीज पे जस्ट लाइक पाकिस्तान जैसे है तो इसमें यू नो कि जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर्स हैं ज़्यादा पॉपुलेशन उन कंट्रीज की और उनके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज या तो लिमिटेड हैं या वो फुली उनको उनके पोटेंशियल्स को जो है वो रियलाइज नहीं किया गया तो इन कंट्रीज के अंदर अक्सर इस तरह की जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो अराइज होते रहते हैं और उनको टाइम टू टाइम एड्रेस भी किया जाता है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली आती हैं और इसी तरह इंटरवेंशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो ला के पर्पस भी होता है कि आपका हर ह्यूमन बीइंग जो है जो भी बंदा है पॉपुलेशन एंड योर एनिमल्स उन सबको उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जाए और उनको वो टाइमली प्रोविजन की जाए दिस इज just food security. A very interesting concept. So, Nasir साहब, building on the food security, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो एग्रीकल्चर का क्या contribution है into our national GDP? जुनेद एग्रीकल्चर को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह से इसको अंडरस्टैंड करने की इस नेशन को ज़रूरत थी और अभी परहैप्स है उस तरह से इस सेक्टर को एक्नॉलेज नहीं किया गया या इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इफ यू सी तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की है विच इज आई से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज 19.3% ऑफ द नेशनल जीडीपी अगर इनको रुपयों में अगर ट्रांसलेट करूं तो ये तकरीबन 7.5 ट्रिलियन रुपीस जो है एनुअली आपके
सिस्टम में इंडक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इसकी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देखें, जैसे आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, कि इस साल पाकिस्तान ने जो टेक्सटाइल गुड्स हैं उनमें 15 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट की है, सॉरी एक्सपोर्ट की हैं। फिर इसी तरह वी आर एक्सपोर्टिंग राइस ऑफ अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर एंड सेम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ अराउंड 700 मिलियन डॉलर्स। और इसके अंदर स्टिल देयर इज अ बिग गैप, और इसके अंदर और भी आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस नंबर्स, अगर मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं इट्स अ बैक बोन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इट्स अ वेरी राइट। लेकिन इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में या कमर्शियली जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ इसको 19.3 पे लिमिटेड कर देते हैं। एक्चुअली इट्स कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट 38% इन द नेशनल जीडीपी। और इसको मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इसको फोकस इसके ऊपर नेशनली कम्युनिटीज का भी, गवर्नमेंट्स का भी, वो इसी ग्रेविटी के साथ हमारा होना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी इज वन क्वेश्चन बेसिकली। तो आपके पास इस वक्त जो कोविड की आप सिचुएशन देखते हैं या इस तरह की, तो अब तो आपकी इंटरनेशनली जो फूड इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 40% इंटरनेशनली। तो उसमें पाकिस्तान के नंबर जो हैं वो तकरीबन 10.5% के करीब जो है लास्ट मंथ के थे। और चूंकि हमारे यहाँ बहुत हैवी पॉपुलेटेड कंट्री है, इस ऑलमोस्ट फिफ्थ और सिक्स पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी और भी एक सेंसिटिव जो है वो पोजीशन इख्तियार कर जाती है। तो इसको जो फोकस है वो मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटीज को भी साथ मिलके और गवर्नमेंट के लेवल को भी काफी सेंसिटिविटी इस पे अभी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सो मेनी टाइम्स के ऊपर एग्रीकल्चर को एक जो प्राइम इम्पोर्टेंस है या टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लिया हुआ है। तो इट्स गुड थिंग, और इसको भी और फर्दर प्रमोट करने की जरूरत है। Very rightly said, Nasir Sab, के government की key priority है. Let's see what Fakhr Imam, the Federal Minister of National Food Security, has to say about national food security and relevant issues. Being a proactive fertilizer industry player in supporting the cause of national food security. Fatma Group's efforts towards Rabi campaign 2021-22 to educate the farmers about the wheat cropping technologies in various districts are highly acknowledged. Fatma Group is providing So I think we are facing some technical glitches. Yeah, so Nasir Sab, Abhi, we'll play the message of Fakhr Imam Sab. But in your opinion, how overall agri exports contributes to the overall growth of our economy and sustaining our GDP? देखिए सर, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 17 टू 18 बिलियन यूएस डॉलर जो है पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज को हो रही होती है। अगर आप अपना टोटल जीडीपी का लास्ट ईयर का अगर आप एक्सपोर्ट देखें, दैट वाज अराउंड जो है वो 25.26 बिलियन यूएस डॉलर था। और उसमें से 70% जो है वो आपकी एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मेनली आपकी कॉटन है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो 15 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ कॉटन गुड्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसी तरह तकरीबन कुछ 2 बिलियन डॉलर आपका राइस जो है, प्रोसेस्ड राइस, ये यूरोप और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इवन टू चाइना। एंड द थर्ड इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और इन तीनों शोबों में भी अभी स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ा सकते हैं, और अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी आप बेहतर तरीके से मैनेज करने की पोजीशन में आ सकते हैं। बिल्कुल सही. So let's see what Fakhr Imam has to say about the food security. proactive
Fatma Group has been a proactive fertilizer industry player in supporting the cause of national food security. Fatma Group's efforts towards Ruby campaign 2021-22 to educate the farmers about the wheat cropping technologies in various districts are highly acknowledged. Fatma Group is providing unique technical and advisory services which are mostly at par with the international standards and criteria. I appreciate Fatma Group's new initiative to provide a learning platform for the community at large. So, very important message from the minister. Nasir Saab, a phenomena that is quite different across the world, and it's different in Pakistan, which is land holding. So, usually 250 एकड़ का जो farmer है across the world, वो एक छोटा farmer consider होता है. 700 एकड़ का medium है और 1200 एकड़ और above जो classification है वो large farmer में classify होता है. What about Pakistan farming in farm holding landscape? जी जुनेद, ये एक काफी इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और एक्सपर्ट्स लेवल के ऊपर इस पे काफी डिबेट होती है. अगर मैं आपसे नंबर्स इसके पहले शेयर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल आपसे कि 56 मिलियन एकर्स जो है वो एरेबल लैंड है या वो कल्टीवेबल लैंड है. अब उस 56 मिलियन एकर्स के अंदर जो नेट सोन एरिया हमारा इस वक्त है दैट इज अराउंड 38 मिलियन एकर्स, और इसमें से 17.9 मिलियन एकर्स आर टेक्निकली उसको नाम दिया जाता है करंट फेलो लैंड्स. करंट फेलो लैंड का मतलब ये है कि जहाँ पर रेगुलर फार्मिंग नहीं होती, दोज क्रॉप्स अब सॉइल्स आर कल्टीवेबल, लेकिन कहीं उस पे पानी अवेलेबल नहीं है या कोई और जो रोड्स के या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो सपोर्ट है एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ये अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारा एक बहुत बड़ा चंक जो है लैंड्स का वो अनयूटिलाइज्ड है. और फूड सिक्योरिटी को फ्यूचर में जाके मैनेज करने में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उन लैंड्स को जो है वो अंडर क्रॉप कल्टीवेशन लाने की जरूरत है. दूसरा ये है कि जैसे आपने बात की कि दुनिया में जो 250 एकड़ का फार्मर है वो स्मॉल फार्मर है और 700 मीडियम एंड मोर देन 1000 जो है वो लार्ज फार्मर है. ये एक बुनियादी स्ट्रेंथ है इन कंट्रीज के पास जिन्होंने भी एग्रीकल्चर के अंदर ग्रो किया है या जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आए हैं. और उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग थी, बिकॉज मैकेनाइजेशन के लिए यू a big land holding so that कि मशीन जो है वो वन गो के अंदर सो मेनी एकर्स के ऊपर वो अपने ऑपरेशंस मुकम्मल कर दे और वहाँ पे आपकी लेबर भी ज़्यादा कम रिक्वायर्ड होती है और टाइमली आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं. पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्मॉल जो है होल्डिंग्स फार्मर्स की, ये भी एक बड़ी वजह है कि हमने उस पेस के साथ तरक्की नहीं की जिस तरह से बाकी ममालिक में की है. बट आई थिंक इट्स नॉट आवर वीकनेस, इट इज़ आवर स्ट्रेंथ, और इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है. स्टैटिस्टिकली अगर मैं कहूँ तो आपके पास कुछ तकरीबन 8.3 मिलियन एकर्स हैं इस मुल्क में जी, और उसमें कुछ तकरीबन 65% फार्मर्स जो है उनके पास 5 एकड़ या इससे कम जमीन अवेलेबल है. अब इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान के अंदर भी ये वो लैंड पैच है जिसको आप इकोनॉमिकली आप कहते हैं कि ये वायबल लैंड पैचेस नहीं है, और इसको हम एग्रीकल्चर टर्म्स में कहते हैं या इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि दीज आर सबसिस्टेंस फार्मर्स. सबसिस्टेंस फार्मर्स ये हैं कि जो अपने लिए ही प्रोड्यूस करते हैं और जो डायरेक्टली उनकी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी, नेशनल प्रोडक्टिविटी वो कम होती है, लेकिन इन वन वे और दी अदर अगर वो अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी एक नेशन का पार्ट है, तो वहाँ पर उसकी कंट्रीब्यूशन आ गई. दूसरी बात यह है कि जो इसके अलावा को 25% फार्मर्स हैं जिनकी जमीन 12.5 एकड़ या उससे कम है, 12.5 एकड़ और 5 एकड़ के दरमियान में ले लें, तो ये टोटल जो है 65% और 25% मींस 90% ऑफ योर कंट्रीज फार्मर हैव लेस देन 12 एकर्स ऑफ लैंड. अच्छा, ये वो एक और इनके जो लैंड होल्डिंग है दैट इज ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग का 48% ऑफ कल्टीवेबल लैंड इनके पास है.
जबकि कुछ में 52% जो है वो 12 एकड़ एंड प्लस और बड़े फार्मर्स के, बड़े फार्मर तो नहीं 50 एकड़ से बाद में शुरू होते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग कि 12.5 एकड़ से ऊपर वाले जो है उनके पास कुछ में 52% लैंड है। तो इन फार्मर्स को रिवाइवल के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो हसन ही हैज गुड एक्सपीरियंस इन ऑल दिस कि जितना आपका छोटा फार्मर होता है उसका फैमिली साइज भी सर उतना बड़ा होता है और उसको लेबर के वो इश्यूज नहीं होते। अगर हम जैसे हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं टू बी, ये सबसे बड़ी शायद स्ट्रेंथ है हमारे पास और हमें इस स्ट्रेंथ को हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए यूज करना चाहिए सो दैट कि हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीजें, दे नीड मोर, दे आर मोर से यू कैन से लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। और अगर लकीली आपके पास छोटे फार्मर का अगर फैमिली साइज बड़ा है और आपके पास घर में ही लेबर अवेलेबल है तो ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं उन फार्मर्स के लिए, प्रोवाइडेड कि हमारा जो फोकस है ये इंडस्ट्री लेवल पे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ और फार्मर कम्युनिटीज लेवल पे बात कर रहा हूँ। और जो यंग लोग जो कि एक्चुअली एग्री बिजनेस के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के तौर पर आगे लेके चलना है। तो उससे आपकी एक तो ज़ाहिर है हमारे पास जितने डेट हैं और जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन है, मुझे पूरा बिलीव है और मैं पूरे यकीन के कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जितनी भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये जब भी रिजॉल्व होंगी ये स्मॉल फार्मर से होंगे, प्रोवाइडेड कि हम इनको प्रॉपर इनको वो अपॉर्चुनिटीज और वो क्रॉप्स और वो सपोर्ट देने में कामयाब हो जाए। So you talked about the overall potential of export industry. इसमें at the same time एक जो challenge है वो है constant rise in overall inflation और food prices. Almost कोई 10% के around food prices increase हुई हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस टाइम क्या स्टेटस है ओवरऑल क्रॉप्स का जब हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं एंड विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट? इसमें जो नहीं देखने वाली बात ये है कि इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है आपकी जो नेशनल नीड है एंड देन सरप्लस जो है वो हमेशा एक्सपोर्ट के लिए जाता है। तो हमारे यहाँ कुछ क्रॉप्स हैं जिनके हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आपका कॉटन जो है ये हमारी लोकल कंजम्पशन के अलावा, जैसे मैंने पहले आप सर्च किया कि हमको तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर का फैब्रिक जो है कॉटन ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट्स फुली आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए। द सेकंड क्रॉप विच आई थिंक सो फ्यूचर के अंदर भी इसका सेगमेंट बढ़ेगा, दैट इज राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के अंदर जो है हमारी क्लाइमेट चेंज के लिहाज से उसकी जो फिट होना है इस पाकिस्तान के लिए, दैट सीम्स कि इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और इसमें राइस के अंदर हम फर्दर भी गो कर रहे होंगे। थर्ड जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज मेज क्रॉप और कॉर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। तो ग्रेजुअली एवरी ईयर वी आर गेटिंग मोर यील्ड्स। और वीट जो है ये पिछले कई एक सालों से इसकी जो यील्ड थी तो स्टैग्नेंट और प्रोडक्टिविटी तकरीबन कोई 24-25 मिलियन टन्स एनुअली हम इससे ले रहे थे। लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर पॉपुलेशन की साइड पे आके देखें तो हमारे यहाँ हर साल को तकरीबन 5 मिलियन लोग इस सिस्टम में इंडक्ट होते हैं। Perhaps it's equivalent to the population of the New Zealand. तो इतने लोग अगर हर साल आपके इंडक्ट हो रहे हों तो वो ग्रेजुअली ज़ाहिर आपके ऊपर ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के प्रेशर्स आपके और बढ़ने हो जाते हैं। और कोविड सिचुएशन में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड फूड के अंदर 40% की इन्फ्लेशन देखी जा रही है। और इसी तरह इनपुट इंडस्ट्री भी इसी तरह से है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू योर सप्लाई चेन। तो उससे आपकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है। और पाकिस्तान चूंकि बेसिकली इज एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन जो फूड की रिक्वायरमेंट है हमारी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर एक अभी भी गैप मौजूद है, स्पेशली वीट की। जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि हम कुछ तकरीबन 24-25 मिलियन टन जो है एनुअल लेते थे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई और वो 400 रुपीज पर मॉन बढ़ाई। और उससे ये हुआ कि एक तो वो ज़्यादा एरिया के ऊपर लगी और फार्मर ने उसको
इनपुट का यूज़ भी प्रॉपर किया और उसकी मैनेजमेंट जो है क्रॉप की, ज़ाहिर है उसको ये पता था कि इससे मेरी आरओआई ड्राइव होती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर को 27.2 बिलियन टन्स जो है वो 27.2 मिलियन टन प्रोड्यूस की, विच वाज 2 मिलियन टन मोर देन द प्रीवियस। इसी तरह जो आपका है राइस, इसके अंदर भी अभी स्टिल 2.6 मिलियन टन की गुंजाइश जो हमारे पास है। मेज हमारे पास को 1.5 मिलियन टन हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो आपकी लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री को जब वो फीड कर रही होगी तो आपकी जो मीट की जो प्राइसेस हैं वो नीचे लाने में आपको बड़ी मदद मिलेगी, और उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो ग्रेन्स के ऊपर प्रेशर है वो भी कम होगा, बिकॉज योर पॉपुलेशन विल गेट अ बैलेंस डाइट जिसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अगर आप मिला दें तो फिर ग्रेन्स के ऊपर प्रेशर कम आएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पे मेज की प्रोडक्शन जो उसको बढ़ाई जाए ताकि जो लाइफ स्टॉक के लिए ज्यादा फीड अवेलेबल हो। Cotton is a challenging crop for us. In 2014, we produced around 14 million bales, and our local demand, you say the consumption of the country is also almost 14 million bales. But it's very important to mention here that 1 million bale, when it goes to the textile wheel, it converts into a 1 billion US dollar. जो उसमें हमारी बहुत बड़ी हिट है, और इसके लिए जो है रिसर्च, सीड रिसर्च, इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इस वक्त हमारी yield जो है वो तकरीबन कुछ 7 मिलियन बेल्स के करीब हम आए हुए, विच इज़ 50% रिड्यूस्ड। तो इसके ऊपर फातमा फर्टिलाइजर जो है वो भी हम काम कर रहे हैं। यू नो द सनीफा, दे आर वर्किंग ऑन कॉटन सीड टेक्नोलॉजी। आई एम आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस प्रोजेक्ट, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह ताला इस कंट्री के लिए हम कॉटन की सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ सोल्यूशन देंगे। Very nice. So I agree with you कि cotton seed पे काफी काम हो रहा है. In fact, seed is the starting point जहाँ से crop yield ensure होती है और secure होती है. But at the same time, एक और ingredient which is very important, जिस पे फातिमा फर्टिलाइजर ने in recent past काफी काम भी किया है और contribute किया है, that is fertilizer. So in your point of view, जो fertilizer nutrient consumption है, वो overall किस तरह से distributed है और उसका क्या impact है on overall yield? जी, इसमें जुनैद मैं दो चीजें जो हैं वो एक्चुअली आपको बताऊंगा कि एक तो ज़ाहिर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो सॉइल हेल्थ है, ये पहला एक प्री रिक्विजिट है कि आपकी सॉइल जो है वो हेल्दी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सॉइल्स हैं दोज आर डिप्लीटेड, और इसके अंदर नाइट्रोजन से इज 100% डिप्लीटेड। फॉस्फोरस जो कि ग्रेन्स की या फ्रूट की फॉर्मेशन के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही है, दैट इज 80 to 90% जो है वो डेफिशिएंट है। तो इसके लिए फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है फार्मर्स के लिए भी कि वो फर्टिलाइजर का यूज़ करें। अब फर्टिलाइजर की जो यूजेस के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो अमंग ऑल एग्रो इकोनॉमीज में सबसे कम फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। यानी कंट्रीज जो है अगर वो 300 केजीज एरेबल लैंड पर हेक्टेयर पे यूज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज अराउंड सम वेयर 150 केजीज पर हेक्टेयर। एक तो इसकी जो पर एकड़ जो है वो इंक्रीज करने की जरूरत है इसके यूजेस को, एंड सेकेंडली इसको बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाई वैल्यू फर्टिलाइजर जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर है, जिनकी जो है एबिलिटी कि वो ट्रांसलेट करें प्लांट न्यूट्रिएंट को इनटू यील्ड, तो उनकी सिलेक्शन और उसके ऊपर अवेयरनेस टू द फार्मर्स वेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यू नो इंटरनेशनल देयर इज अ 4R टेक्निक जिसके ऊपर वो कहते हैं कि आपने राइट सोर्स जो है सेलेक्ट करनी है, राइट टाइम पे उसको अप्लाई करना है, और राइट डोज उसको देनी है, एंड राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। सो दैट बात करने का ये था कि उसकी सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फातिमा फर्टिलाइजर ने ये बहुत डेमोस्ट्रेट किया है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान जो फातिमा फर्टिलाइजर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वी प्रोड्यूस specialized product which is nitrophos, we see it's such nitrophos and calcium ammonium nitrate। जो एफिशिएंसी है नाइट्रोजन सेगमेंट के अंदर हमारी नाइट्रोफॉस की, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, वो इज मच हायर देन द यूरिया।
यूरिया इफ यू सी कि वो तकरीबन जो है 30% वोलेटिलाइज कर जाता है जब फार्मर उसको ज़मीन में डालता है। अगर पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री अगर मैं यूरिया की बताऊँ तो वो तकरीबन 232 बिलियन रुपए की है, और उसमें से 30% वोलेटिलाइज करने का मतलब ये है कि सीधा-सीधा फार्मर को 67 बिलियन रुपया एनुअल लॉस आता है, और इस कम लॉस की वजह से फिर उसकी यील्ड में जो कमी आती है वो तकरीबन 130 बिलियन की है। अगर टोटल इंडस्ट्री आपकी यूरिया की 232 बिलियन की हो और उसका टोटल लॉस वो 197 बिलियन का हो, तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि, और फार्मर्स को भी ये चाहिए कि वो सही सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर जो है उसको वो यूज करे। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट दैट इज फास्फोरस, जो कि मेजर प्ले कर रहा था उसकी जो फ्लावर्स एंड फ्रूट और इसकी ग्रीन प्रोडक्शन के लिए, दैट इज फास्फोरस। और पाकिस्तान में अनलकीली डैप का यूज जो है वो कई एक सालों से बहुत ज्यादा है, जबकि पाकिस्तानी जमीनी सॉइल है, और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप एसिडिक जो है रिएक्शन की फॉस्फेटिक सोर्सेज हैं वो यूज करें, बिकॉज उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और ये जो सूरत है जो मैंने आपको नंबर्स नाइट्रोजन के दिए हैं यूरिया के, अगर आप फास्फोरस के लिए देखेंगे तो इट्स हॉरिबल नंबर्स, हॉरिबल इन टर्म्स ऐसे कि आपकी जो टोटल है मार्केट वो तकरीबन कुछ 374 बिलियन की है। और जुनेद, इसमें मैं आपको बताऊं कि तकरीबन हम 7 लाख पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन 15 लाख हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। उस इंपोर्ट के ऊपर हमारा कुछ 225 बिलियन रुपए का इंपोर्ट बिल है डीएपी का, और उसकी यूज एफिशिएंसी इज ओनली 15 to 20%। जस्ट इमेजिन कि हम 374 बिलियन का डैप इंपोर्ट करते हैं और उसमें से 310 बिलियन का जमीन में वो फिक्स हो जाता है, जो कि एक्चुअली क्रॉप को नहीं मिलता। इट्स बहुत बड़ा ये अलमिया है कि हमारे यहाँ जो यील्ड्स पिछले कई एक सालों से स्टैग्नेंट है, और वो पारी का यील्ड हम इंक्रीज करने में इजाफा नहीं कर सक रहे ऑन अ नेशनल लेवल। उसमें ये दो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। नाइट्रोजन यूज यू नो 6.2 मिलियन हो रही होती है, और डैप जो है 2.2 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे यूज होती है। तो इसमें अगर आप टोटल मार्केट जैसे मैं बताया कि 374 बिलियन की है, इसके ओवरऑल नेशनल लॉसेस 440 बिलियन के सर। आपने रेवेन्यू भी अपना खराब किया और फार्मर की इनकम भी खराब की। इसलिए हम ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप ये जो नाइट्रोफॉस है विच इज एसिडिक, और ये हमने प्रूव भी किया है, वी आर वेरी लाउड एंड क्लियर ऑन मीडिया एंड एवरीवेयर कि 10% हायर यील्ड जो क्लेम है हमारा, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि हमारी जो नाइट्रोजन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड फास्फोरस जो सल्फर नाइट्रोफॉस हम कहते हैं, ये सोर्सेस जो हैं ये बेटर यूज एफिशिएंसी रखती हैं, और जिसकी वजह फार्मर ज्यादा यील्ड लेता है, और ये नेशनल आपकी फूड सिक्योरिटी के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रही होती है। Very pertinent, and I think right use of fertilizer ज़्यादा yield produce कर सकता है। नसीर, हमने we have talked about GDP, फिर उसके बाद हमने fertilizer का utilization देखी, nutrient का combination देखा, crop status देखा। As Fatma Fertilizer and head of technical services, क्या नई प्रायोरिटीज हैं फातिमा ग्रुप की, और क्या विजन है इन टर्म्स ऑफ एग्री बिजनेस एंड फैसिलिटेटिंग फार्मर्स? जुनीद, वेरी गुड क्वेश्चन सर। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो फातिमा फर्टिलाइजर को नेशनल कॉज के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है पाकिस्तान का, दैट इज बेसिकली फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी हमने ये अंडरस्टैंड किया, बल्कि इट्स ओपिनियन ऑफ द मेनी एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड, कि जब तक आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे इस सेक्टर को, से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ फर्टिलाइजर्स के ऊपर ही काम करता रहूँगा तो शायद मेरा बेनिफिट उसमें ज़्यादा हो, लेकिन अगर मैं नेशनल कॉज के लिए काम करूँगा, जैसे मैंने पहले अफसर्स किया कि हमारे पास 56 मिलियन एकड़ ज़मीन है, और उसमें से 17.9 मिलियन एकड़ जो हैं दोज आर फैलो लैंड्स, और यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर भी है, प्लस हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना मिडिल ईस्ट को, अफ्रीका को एंड अदर कंट्रीज, ये शायद हम सबसे ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं।
और आपका ग्वादर पोर्ट जो है चाइना कहाँ से आया है इस सारे काम के लिए, और हम तो बिल्कुल उसके ऊपर हमारी अपनी पोर्ट है। तो इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के हमारे यहाँ तो दुनिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। विद द सेम एक्चुअली फील के सब नंबर वन तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसको आप इंश्योर कराएं, और उसके लिए हम पूरी तरह गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ एंड एकेडेमिया के साथ वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली एंड वी हैव made some say collaborations with the Chinese, because China ने वर्ल्ड को प्रूव किया है कि उन्होंने जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो उन्होंने एग्रीकल्चर के थ्रू की है। तो चाइना की जो सबसे बड़ी फर्म है चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, वो हमारी कोलैबोरेटिव पार्टनर है, प्लस त्यानी ग्रुप जो कि शिनजियांग त्यानी में है और वो कॉटन में दुनिया में सबसे ज़्यादा वो यील्ड निकाले हैं। वी आर वेरी क्लोजली वर्किंग विद देम एंड वी आर टेस्टिंग देयर इक्विपमेंट ऑफ स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर we will start some big projects with Chinese and some other companies in the world। और उसमें हम जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जैसे हम पहले कह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर बड़े फार्म साइजेस हैं, और उस फार्म साइजेस में जो हमारी फेलो लैंड्स हैं, हम गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं कि उसमें कोई बड़े चंक जो है वो इंडस्ट्री को या कॉर्पोरेट फार्म्स को दिए जाएं, सो दैट कि वो उस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएँ और लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी विजन है वो यही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और हसन आबदी साहब की जो प्रेजेंस है यहाँ पे, इट शोज कि बेसिकली वी आर कमिटेड, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करें गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड आई वेरी मच थैंकफुल टू फखर इमाम साहब के ही एक्नॉलेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड द एफर्ट्स ऑफ फातिमा ग्रुप। तो एनीहाउ दिस इज बेसिकली आवर विजन कि हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है सर। So thank you very much, Nasir Sahab. In the same regard, let's see what Mr. Hussain Jahania, Provincial Food Minister, has to say about Fatma Group's contribution to the food security. पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान इस वक्त नेट फूड इंपोर्टर कंट्री है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। इसलिए हम फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए ज़राअत में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी फूड हम जब भी किसी फसल की प्रमोशन के लिए कोई कैंपेन चलाते हैं तो फातिमा फर्टिलाइज़र उस कैंपेन में हमारा हिस्सा बनता है, और ये सिर्फ फर्टिलाइज़र मार्केट करने के अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च पे भी तवज्जो दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे इनका फोकस है उससे So Hussain Jahania talked about the overall agriculture potential and government priorities. Coming to Hassan, we have talked about overall GDP overall agriculture contribution of in GDP. At the same time, एक चीज जो बड़ी important है, that is new ways of agriculture and agri-tech mechanization. तो जब हम बात करते हैं integrated farming platforms की, so what is this concept and how that can be beneficial for the farmers? Thank you, Junaid. Assalamu alaikum, everybody. Let's start. That's a good question. Let's start with the introduction. कि ये concept है क्या? Before we move on any further. So, corporate farming or integrated farming platform की जो concept है, basically it's an end-to-end value chain concept जहाँ पे आप के पास production facility है in the form of land, ज़मीन की सूरत में, उसके साथ आपके पास एक processing की facility है, and that is connected to the warehousing of एक जो आपकी choice है, and that eventually connects
the entire produce into the export, either through the export or adding value to the produce is the ultimate goal of the entire concept. ہمارے یہاں فار ایگزامپل پاکستان میں جیسے بھی نصیر خان صاحب نے بھی مینشن کیا کہ دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی وین اٹ کمس ٹو فیلو لینڈس رفلی اراؤنڈ 17.9 ملین ایکرز ہیں. دیٹس اے ہیوج پوٹینشیل اگر دیکھا جائے, جس کو ہم لوگ ان لینڈس کو انڈر فارم لینڈس کنورٹ کر کے اور اس کے اندر بہترین طریقے سے آپٹیمائز جو ٹولز ہیں, جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں, چاہے وہ پریسیجن ایگریکلچر ٹولز ہیں, ان کو یوز کر کے ان فارمز کو جو ہے پروڈکٹیو فارمز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ اس میں ہم دی اپرچونیٹی ہے کہ اس کے اندر فردر ویلیو ایڈیشن کی جائے تھرو پروسیسنگ, جو سب سے بڑا باٹل نیک ہے اس وقت کنٹری کا. جہاں ایز اے بزنس مین, مطلب اگر میں دیکھوں تو مجھے آئی شوڈ سی کہ دس از دا پوائنٹ ویئر وی شوڈ اسٹارٹ. ہم پروسیسنگ پہ سے پہلے جا کے روک رہے ہیں, ویئر ایز وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا پروسیسنگ پارٹ, جہاں پہ زیادہ ویلیو ہے, جہاں ویلیو ایڈیشن ہڈن ہے. اوکے, سو آپ نے پریسیجن ٹیکنالوجیز اور پریسیجن فارمنگ کی بات کی ہے, اینڈ پہلے تو یہ بتائیے کہ پریسیجن فارمنگ ہے کیا, بیکاز آئی کین سی اے لاٹ آف پوٹینشیل ان انٹائر ایگری ویلیو چین, چاہے وہ فارمرز ہوں, چاہے وہ لوگ ہوں جو ایسوسیٹیڈ ہیں ایگریکلچر کے ساتھ, ایون آرگنائزیشنس کے لیے, اور اٹ ول کریٹ فردر a lot of job opportunities for Pakistanis as well. تو پریسیجن ٹیکنالوجی اور پریسیجن فارمنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ بینیفیشل ہو سکتی ہے فار دا انٹائر سوسائٹی ایز اے ہول. Absolutely, it's an excellent question, Junaid. So, precision agriculture technology is actually using less inputs to produce more. اگر میں اس کو ایک سمپل ورڈ میں ڈیفائن کروں تو کم سے زیادہ پیداوار, یعنی کم انپٹس کے یوز سے آپ زیادہ پروڈیوس کریں, ویدر اٹ از کراپ انپٹس, ویدر اٹس اریگیشن واٹر, ویدر اٹس دا لینڈ, کسی بھی فارم میں کم لینڈ سے زیادہ پروڈکشن کیسے ہوگا. there are tools, there's ways, there are a lot of ways actually. Globally وہ ٹولز اڈیپٹ ہو رہے ہیں across the globe, اور اس فار ایگزامپل ون آف دا ایگزامپل از use of variable rate applications of crop inputs. Like جیسے ہمارے ہاں کیسے وہ ٹیکنالوجیز اڈیپٹ ہوں گی, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارے ہاں لیٹس سے جیسے بھی خان صاحب نے ذکر کیا کہ جو یوز آف فرٹیلائزر ہے, it has to be a balanced use of fertilizer. جن لینڈس کو جہاں جتنی ریکوائرمنٹ ہے, تو 4R nutrient stewardship کا جو کانسیپٹ ہے, that is the key. Similarly, جو use of pesticides ہے, that has to be targeted, that has to be precise. یعنی جہاں جس انپٹ کی ضرورت ہے صرف وہیں دی جائے. That not only reduces, keeps the cost low, آپ کی ایک تو پروڈکشن کی کاسٹ بھی لو رہے گی, plus it helps the environment at the same time. And the moment you keep your cost of production low, obviously your profitability goes higher. That's the end goal of the precision agriculture. Plus, eventually, when we come to a point jahan hamare paas kuch data in the form of satellite, historical imagery ki form mein kuch data hai, geospatial images ki form mein kuch data hai, then we will be in a position ki jahan hum through robotics یا through drone applications of crop inputs کو introduce کر سکتے ہیں. Some of the initiatives اس میں یہ بھی ہیں کہ ہم we're already working with some of the partners and financial institutions جن کے ساتھ ہم لوگ کچھ ایسے initiatives launch کرنے جا رہے ہیں in the near future. And again, some of those جو model farms develop کرنے کا ہمارا plan ہے, جو ہم جا رہے ہیں future میں develop کرنے, they will showcase how these technologies are changing lives in terms of bringing prosperity in the livelihood of farmers and rural communities. Again, and creating opportunities for employment as well. Okay. So, Hassan, you talked about precision farming, high-tech mechanization.
बहुत कम पाकिस्तान में ग्रीन हाउसेज हैं फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या एवरेज क्रॉप यील्ड बाय एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है बाय यूजिंग ग्रीन फार्मिंग? Another great question, Junaid. अगर मैं इसको डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करूं, लेट्स से द एंटायर प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री, लेट्स से अगर मैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की प्रोडक्शन की बात करूं तो it's roughly around 700 million US dollars per annum जो हमारी एक्सपोर्ट है currently. But at the same time, there is a huge potential. Lot of why? Because there's a lot of post-harvest wastage. There's losses in the form of post-harvest. Roughly, I would say 40%, 37 to 40% जो हमारे losses हैं, maybe on a lighter note, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन 40%, roughly around 40% जो produce है हमारी वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की नजर हो जाती है, ज़ाया हो जाती है फॉर एक्स वाई जेड रीजंस. स्टोरेज का ना होना, क्लाइमेट जो आपके वेयर हाउसेज हैं उनका ना होना, टाइमली लेबर का अवेलेबल ना होना, ऑल दोज थिंग्स आर मैनेजेबल. दैट्स व्हाई मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अराउंड लेट्स से 2.5-ish बिलियन यूएस डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट. देयर इज अ पोटेंशियल जिसको हमने कैप्चर करना है या कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल ग्रीन हाउसेज production of high value crops. जो कि I mean we have examples globally. Turkey है हमारे सामने, Netherlands for example, the Dutch are the second largest food producers in the world. Again, most of their production goes through controlled greenhouse structures. So ये concept है जो बड़े अरसे से चला आ रहा है. और again, when it comes to small farmers, obviously there's an upfront cost that goes in the form of infrastructure installation and whatnot. But at the end of the day, अगर देखा जाए तो ये having the off-season vegetable production and high value crops, it does pays off big time. Nicely said कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में एक चीज जो है पिछले कुछ सालों में काफी फोकस भी रहा है फार्मर्स का, ओवरऑल इंडस्ट्री इमर्ज की है, दैट इज हाई क्वालिटी साइलेज production and export. So how do you see the overall potential and opportunity for the people who are associated in the entire end-to-end value chain in agribusiness and especially the silage business? Yeah, so Junaid, इसमें ये एक Hassan, are you still with us? I shouldn't say. Can you hear me? I can hear you. Hello. हाँ, Junaid, silage industry की अगर बात करें, इसमें मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि राइट नाउ अगर मैं देखूँ कि करंटली एक्सपोर्ट जो है हमारी, Please go on, Hassan. which is current silage export, अगर मैं इसको let's say US dollars में calculate करता हूँ, it's around 52 million US dollars for the entire nation. But again, there is still the potential of about 200 million US dollars. So that means there is still about 150 million US dollars room to play with. So that is a big market, huge market. The challenge is, I mean, it is a high value commodity because most of that silage is being, I would say, is either exported or being used by the dairies in the country. Some of the challenges or bottlenecks जो हैं वो जो मैंने identify किए हैं खान साहब के साथ भी उनसे भी discussion में भी, वो ये है कि हमारे पास we lack some of mechanization and processing equipment, which is right now fairly pricey. If somehow we are able to manage that part, or if we get some sort of government support,
on that part, then obviously this will be a very developing, fastly developing industry. So that's one of the thing कि जब हम लोग corporate firms के model में enter होते हैं, one of the thing is कि this not only creates opportunities, जैसे मैंने कहा कि new jobs, new employment create होती हैं, उसमें जो processing से related लोग हैं उनकी training के through उनको induct किया जाता है, that improves the livelihood of the rural communities, and that obviously at the end of the day it brings economic prosperity. Again, there is a huge potential for the youth, जैसे नसीर खान साहब ने भी मेंशन किया कि इसको एक बिजनेस इंडस्ट्री के तौर पर इसको लेके चलना है हमने, और हम फातिमा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि we have the muscle, we have the resource, we have the right tools to develop and make them successful if they're willing to join us. Mm-hmm. Okay, so Hassan, we talked about silage. What about meat and dairy production and export? So how do you see the entire industry? Great question. So again, huge potential. I would say about $5 billion US dollars potential. I'm assuming roughly around that. When it comes to the biggest opportunity, when I look around, हमारा neighbor में हमें सबसे बड़ा client मिलता है. Let's say if we are in that business, हम लोग currently we're trying to have some collaborations, international collaborations with some foreign partners, जिसमें हम लोग through corporate farming will be producing, processing, and exporting some grain products, some silage bales to Middle East, for example, or what, and halal meat as well. So this is some of the initiatives which we are trying to. We're entering some collaborations, and we will be going through some of the MOUs. So part of that is, for example, dairy products export potential is about 10 billion US dollars. That's another very productive area to play. So इसमें as you can see that हमारे कुछ MOUs हैं. One of our partner when it comes to collaborations, international collaboration, which it is China Machinery Engineering Corporation. In this partnership, we are trying to identify the right technology, the right tools, जो कि हमारे environment में, पाकिस्तान के climate में, which are a right good fit, or which we will be introducing and launching to bring productivity at the farmers level in the near future. So Okay. Yeah, go ahead. Yes, sounds great. So strategic collaboration with different partners who are subject matter experts in their areas would further enhance the overall contribution into the agri economy of Pakistan. And I'm glad that Fatma is playing a vital role in bridging the gap and playing a vital role in boosting the overall economy. So what about hybrid seeds and how you see the overall impact of hybrid seed and high quality seeds on the overall crop yield, and what are you doing in terms of collaborations in this regard? Yeah, so this is one of the most important area which as a country, as a nation, we need to work on. I think Khan Saab ने भी उसको थोड़ा elaborate किया है
having good seed quality is the good start. अगर हम start से ही हमारे पास अच्छा seed है, resource है, we are in good shape. That one of the challenges is कि हमारे पास जो seed की genetic purity के issues हैं, vigor के issues हैं, poor जो उसमें traits का ना होना, like tolerance against diseases, tolerance against insect pressure or drought or abiotic stresses की बात करें. This is the starting point. This is a revolutionary thing that we need to work on. This will bring revolution in our agriculture. So we are actually, I think Khan Sahib did mention that we are working in collaboration with, and some of the projects we're working on is Sanifa. And so through that platform, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें seed में जो है एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिले जिससे हम फार्मिंग कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें और अपनी जो कॉटन की जो बेल्स प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट है उसको फर्दर इंप्रूव कर सकें. इसी तरह one of the initiatives we have taken is the collaboration with the University of Multan, where Fatma Group is closely working with the university research team in order to develop hybrid wheat seed. And we are very hopeful that in the near future we would have a very, very strong and solid solution in the form of hybrid wheat. So let's see what Dr. Asif, the Vice Chancellor of University of Multan, says about it. उनमें से एक बड़ा लीडिंग ग्रुप है जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं और ख़ास तौर पे हाइब्रिड वीट के हवाले से हमने इनके साथ काम किया है, जिसको हमने एक इनोवेशन को कन्वर्ट किया थ्रू R&D इनटू प्रोडक्ट और हाइब्रिड्स हमने बनाए और उसकी कमर्शियल स्केल जो प्रोडक्शन के लिए हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से कई जो इनिशिएटिव्स हैं जिनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं. इन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के हवाले से. उसमें फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम अप्रिशिएट करते हैं इस इनिशिएटिव को. यूथ को मैं इनकरेज करूँगा, स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करूँगा कि इनका ये जो प्रोग्राम है जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उसके जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ये आउटरीच होगी और उसमें उसको दे. Yeah, so he talked about multiple opportunities for youth as well. So Hassan, what's your take on the entire end-to-end value chain and associated people with it? And how do you see the overall potential of agribusiness when it comes to creating more employment for youth or people involved in the value chain? Great, Junaid, excellent question. I see मैं इस तमाम इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को इस तरह देखता हूँ कि मेरा प्रीवियस करियर को अगर मैं देखूँ, प्रीवियसली अगर मैं न्यूट्रिएंट के साथ उसमें यूथ की इंडक्शन हम लोग we used to have that induction when university kids used to join us as like summer students kind of concept, and they eventually they were joining us as full-time sales or agronomist or some sort of any position like that. So when it comes to Fatma Groups, when initiatives like this, which we are taking in agribusiness development sector, there are lots and lots of opportunities जो कि in the near future यहाँ पे available होंगी. And the opportunity for the youth is to right now the time is to explore those opportunities for the youth, and this is the platform where they can develop themselves and grow eventually and in either lots of directions, because we have
lots of directions in terms of, for example, we have fertilizer, we got cosmetics, we got ag business direction. So there are tons of opportunities for the youth to choose from when it comes to platform that Fatma Group has to offer. Yeah. So building upon what you said, for professionals who are experienced can apply for electoral positions that are already published on our LinkedIn page. And for university graduates, we run Empower to Lead program for hiring management training officers. So we'll be initiating the program soon. So let's go on to let's see what we have questions for from the audience. So let's see what are the questions. First question is, how can I join for Fatma Fertilizer? I have MPhil in soil sciences. Currently, I'm working in the United Nations FAO. So Nasir Saab, I think you are the one who can answer this question. Thank you, Janet. Sir, online apply करने के लिए you can guide them better, or we need such resources in the system to अगर ये apply करते हैं तो we inshallah will consider that. So, Nasir Saab, while talking about MPhil in soil sciences, what are the possibilities or career opportunity possibilities in technical services? जी, जैसे हसन बात कर रहे थे कि हमारे पास फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या आप एग्री इंडस्ट्री में देखें तो हमारे पास काफ़ी डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ हमारे पास जो फील्ड एडवाइजरी सर्विसेज की टीम है, वी हैव द लार्जेस्ट फील्ड एडवाइजर्स टीम इन पाकिस्तान. And then we have state-of-the-art soil testing, soil and water testing lab. Then we have facility even to test the plant tissues. Plant tissue analysis facilities are available at Fatma, lab facilities are available, and there will be resources like this. जिन्होंने MPhil किया होगा soil science के अंदर, they are well percent कि इसमें advisory service के अंदर and manager roles के अंदर, और जो है आपकी soil testing lab, इसको कितना नेचुरली हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लस जो खास तौर पे अभी हसन के डोमेन के अंदर जो एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर they will open this all corporate farming and processing, and they have lot of इनिशिएटिव्स उसमें सप्लाई चेन और नेट एक्सपोर्ट्स और इस तरह की सारी चीज़ें. तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटीज़ के लोग जो हमें चाहिए, ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी, बहुत सारे फाइनेंस एंड कॉमर्स के लोगों की, बिकॉज उस बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए फिर वो तमाम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज इट्स अ इंडिपेंडेंट बिजनेस. और यू नो कि इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, और इसमें फर्दर ग्रो करने के और इसमें यूथ को इन्वॉल्व करने के, साइंटिस्ट को, ऑल थिंग्स, और कम्युनिटी एंड स्पेशली द वुमेन जो हमारी रूरल है, वी आर वेरी मच इन वैसे सीरियस टू वर्क फॉर देम, सो दैट कि जो लाइवलीहुड है उनमें उनका भी इजाफा किया जाए. तो इरफान ही कैन अप्लाई ऑनलाइन. Thank you very much, Mr. Saab. So let's proceed towards the next question. So next question is, or rather a comment, nice one, but make improvement to enhance out farmers to make guide according to the new global environment. Yeah, so Hassan, this is a very pertinent question, and we had a detailed discussion during the session on it. So any thoughts on the comment? Yes, absolutely. What I understand from this question is I think it's about readiness, volatility. New global environment means what I understand from that is that how can we be ready, or farmer be ready, considering the new normal? So that's a very, very good question, if that's what Athar means. One of the things is North American farmers or industries actually, they are heavily focused on
the aspects of readiness, volatility, and being ready for unexpected things, considering like pandemic, whether it's climate change, the disasters, catastrophes, and stuff like that. So I will come back to where I started. That it all starts with a seed. For example, one of the things is we might need to consider change in the entire cropping pattern. This is some of the things Nasir Khan Sahib and I have discussed. Considering the soil temperature that is suited to each crop. We need to identify what exactly is the tolerance of a certain abiotic stress for each crop, each variety, or each hybrid even. So that is the kind of work or study we need to dive into now in order to get ourselves ready for the changing environment or the climate. That's just one example. There's tons of other things that would make us ready and prepared for unexpected events for the farmers. Okay, so let's see what the other question is. How do we convince farmers to adopt new fertilizers, which are better for yield and food security? I think that's a very pertinent question from Muiz, because farmers rely on the information, on knowledge transfer by generation to generation. So usually we have seen that there is some skepticism in farmers while using and adapting new fertilizers. So Nasir Saab. सर फार्मर की जो यूजेज हैबिट है किसी भी कंज्यूमर की, इसको शिफ्ट करना बहुत ही सबसे मुश्किल एंड चैलेंजिंग जॉब होती है। और फार्मर को स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है, इनको जो डेमोन्स्ट्रेशन है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वाइटल टूल। और जैसे हमने नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को मार्केट के अंदर एज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के तौर पे फार्मर की एक्सेप्टेंस दी है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके पीछे दैट इज ऑल अ ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन वर्क। हमने फार्मर्स को जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो हमने उनको जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिसमें डैप एंड यूरिया का यूजेज था, हमने किसी को नहीं रोका कि आप ना करें, लेकिन हमने सिर्फ फार्मर से एक रिक्वेस्ट की कि जिस खेत के अंदर आपने डैप एंड यूरिया डालना है, आपने काइंडली उसमें ये मिक्स नहीं करना, और आपने एनपी और कैन सेपरेट, जो भी आपका फील्ड है, भले वो 1 एकड़ है या 10 एकड़ है, तो वहां पे आपने अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डोज बाय द गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया है उसी के मुताबिक कन्वेंशनल भी यूज करें और ये जो स्पेशलाइज्ड भी यूज करें। और हमने तमाम फैक्टर्स फार्मर के लिए बिल्कुल कांस्टेंट रखे कि वो सीड की वैरायटी भी वही होएगी, डेट ऑफ सोइंग भी वही होएगी, सीड उतना दोनों फील्ड के अंदर होएगा, इरिगेशन भी एट ए टाइम दोनों को दी जा रही होएगी, और ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस जितनी भी करनी है। द ओनली डिफरेंस उसमें हमने क्रिएट किया कि आपने सिर्फ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर वो आपने चेंज किया, और इसके अलावा किसी चीज, दिस इज बेसिकली हाउ ट्रांसपेरेंट यू आर इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स। और फिर जब उसके फील्ड डे हम कहते हैं, जब उसका हार्वेस्टिंग डे आता था, तो हम फिर तमाम विलेजर्स को जो उसके नेबर्स थे उनको हम एट द डेट ऑफ सोइंग भी हम बताते थे कि हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। एंड फिर टाइम टू टाइम, आज भी ये एक्टिविटीज पूरे पाकिस्तान में चल रही है, फिर टाइम टू टाइम उन्हीं नेबर फार्मर्स को फिर दोबारा बुलाते हैं, सो दैट कि वो उसकी क्रॉप ग्रोथ एंड स्टैंड एंड दीज ऑल थिंग्स जिसको फार्मर बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है, वो हम उनको दिखा रहे होते हैं। और जब डे ऑफ हार्वेस्टिंग है, दैट इज बेसिकली डे ऑफ जजमेंट फॉर फातिमा, तो वहां पे वो जो होस्ट है वो फिर हमारा बंदा जो होता है वो फिर सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, लेकिन एक्सपीरियंस शेयरिंग जितनी भी है वो होस्ट फार्मर खुद कर रहा होता है। और चूंकि फार्मर जब फार्मर के साथ बात कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो वो ज्यादा मेरा ख्याल रिलायबल आवाज होती है, और ज्यादा वो उस पे फार्मर्स एग्री करते हैं क्योंकि उसने सारे प्रोसेस को देखा होता है। तो इसमें सिंपली मैं सारी बात को इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें फार्मर को आपको कन्विंस करने के लिए एक तो डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करना पड़ेगा। और जब आप इस ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उनको डेमोन्स्ट्रेट कर दें और उसकी वैल्यू आप दिखा दें, तो फिर मैंने देखा है कि फार्मर्स जो हैं बहुत ही
अच्छे तरीके से उसको और बेहतरीन तरीके से उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और अगर आप सिर्फ नॉलेज देने जाओ, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के जाओ, मैं ज़ाती तौर पे एक लफ्ज़ से बड़ा जिनको आप कहते हैं जी मैं फार्मर को एजुकेट कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, या मैं नहीं समझता कि मैं फार्मर को एजुकेट कर सकता हूँ, नहीं। फार्मर आज भी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है जी। और मैंने जितनी भी एग्रीकल्चर सीखा है शायद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैंने फार्मर से सीखा है। क्योंकि आपके 8.2 मिलियन फार्मर्स अगर हैं तो उनमें बहुत सारे फार्मर्स हैं, दे आर वेरी सर रिफाइंड इन एग्रीकल्चर। और आप अच्छी प्रैक्टिसेस लोगों की जो है वो आप सीखें, लोगों तक ट्रांसलेट उसको पहुँचाएँ, उनको डेमोंस्ट्रेट करें। इसी तरह से आप वक़्त के साथ-साथ जो है लोगों को फिर बेटरमेंट के लिए या उसकी लाइवलीहुड के लिए आप बेहतर काम कर सकें, फिर आपकी एक्सेप्टेंस आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ग्रुप इज़ एन्जॉयिंग वेरी गुड स्टेटस, और इसमें हमारी जो क्रेडिबिलिटी है और इमेज ऑफ द कंपनी है, alhamdulillah, it's much better than others. Thank you very much. We have another question, and probably the last one because we are running out of time. So the question is from Dabir Khalid. Dabir कह रहे हैं कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं या फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर की एक्सेस इजी हो और रेडिली अवेलेबल हो फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स. नसीर साहब, over to you. इसमें दबीर खालिद साहब होता यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और अबंडेंस में अवेलेबल होते हैं। हमारे यहाँ से कुछ तकरीबन मोर देन 3000 फार्मर्स होंगे जो कि नेशनली हमारे पास डीलर्स जो रजिस्टर्ड नेटवर्क है, और इन सबको हम रेगुलर सप्लाईज भी दे देते हैं। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री भी यही प्रैक्टिस है। और ना सिर्फ ये बल्कि हमने जो वेयर हाउसिंग नेटवर्क है वो भी इतना एक्सटेंसिव डेवलप किया हुआ है सो दैट कि जो छोटा दुकानदार है जो कि प्लांट के ऊपर जो है बड़ा ऑर्डर नहीं भेज सकता, तो हम ये भी उसके लिए फैसिलिटी रखी हुई है कि अगर उसको कम बैग चाहिए, से वो 50-100 बैग मांग रहा है और 1000 बैग या 600 बैग से नीचे प्लांट से अगर नहीं आता, तो हमने उसके बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर वो वेयर हाउसेस भी जो है वो फैसिलिटी दी हुई है सो दैट कि अगर वो छोटे वॉल्यूम्स लेना चाहते हैं तो वो बल्कि ज़्यादा क्विक और ज़्यादा उसको रैपिड सप्लाईज जो है वो हो रही होती हैं। तो वी हैव इंश्योर्ड ऑल दिस, लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चन से मुझे थोड़ी सी फील ये आ रही है कि ये जो करंट इस वक्त है थोड़ा सा हम स्ट्रेच्ड सप्लाई सिनेरियो जो है वो फेस कर रहे हैं। द रीजन इज कि perhaps there is some गैप आप समझ लें, या कुछ कहीं पे थोड़ा सा जो गैस अवेलेबिलिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट के लेने के स्टेप्स थे वो शायद टाइमली हमने उनको एड्रेस नहीं किया। ख्याल ये था कि जो आप लास्ट ईयर जितनी आपकी कंजम्पशन थी से नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, वो ऑलमोस्ट उतनी ही इस साल रहेगी। लेकिन ये मेरा पर्सनल ये मेरा ख्याल भी है और ये मैंने बहुत सारे लेवल्स के ऊपर डिस्कस भी किया है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने व्हीट प्रोडक्शन जो है वो 25 मिलियन टन से 30 मिलियन टन पर लेके जाना है, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। फिर लास्ट ईयर से आप 27.2 से आप कह रहे हैं 30 मिलियन टन पे जाना है, तो वो उसी वक्त जा सकते हैं जब आप उसके मुताबिक आप न्यूट्रिएंट सप्लाईज को भी इंश्योर करें कि उतनी अवेलेबल हो। लेकिन इवन देन मैं ये डरा नहीं रहा, इवन देन आई एश्योर यू कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला रबी की बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। लेकिन करंटली अभी आप कुछ कहीं पे हम भी सुनते हैं कि कुछ इस तरह के एक्सेस के इश्यूज हैं। If you need any support, you can call to our call center and you can contact with our local जो डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स हैं। आप किसी भी मंडी से, किसी भी जगह से, किसी डीलर से भी आप राब्ता कर सकते हैं। Thank you very much, Nasir Saab. So I think we are already overrunning the time. Very pertinent discussion, very informative, very insightful, and I think the crux of the entire discussion is that the entire agri economy has a lot of potential. The need is to pull the strings and contribute directly or indirectly to the cause, which is food security. And later or sooner, it will not just hit Pakistan, but the entire world. So we need to do effort or contribute as individuals or as in organizations.
With this, I'll end the session. I'm thankful to Nasir. I'm thankful to Hassan for their valuable time. So this is the beginning. This end is the beginning of new series, and we'll bringing different series, web series on various topics, and we'll make sure that we stay in touch with you. So thank you, Hassan. Thank you, Nasir, and Thank thank you very you, much. everyone. Thank Take care. Allah Thank you, Hafiz. Junaid. Allah Hafiz.